Hi folks, welcome to Cambridge Tutorials. Today we're going to see conversation in English. आज हम लोग इंग्लिश के अंदर देखेंगे conversation informal. अभी conversation informal क्या होता है? Conversation informal means we can have this conversation with our friends, relatives, acquaintances, neighbors and the people whom we know. उन लोगों के साथ में हम लोग conversation करते हैं जिनको हम लोग जानते हैं. So this is what conversation informal. Point number 1, जब हम लोग हमारे दोस्तों को मिलेंगे तो हम लोग उनको बोलेंगे क्या गुड मॉर्निंग सर. बोलेगा अरे इसको क्या हुआ, कल तक तो अच्छा था. बोल रहा था हाय दोस्त, हाउ आर यू दोस्त, और आज क्या हुआ है. नो, तो हम लोग वहां पर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह अपने दोस्त को नहीं बोलेंगे. सो जनरली जैसे हम लोग मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स को, एट द टाइम वी कैन से देयर हेलो एंड हाय. We can say hi, hello, hello, hi, hello, hi. We can say anything. Okay, so while meeting our friends, we can say hello, hi, hello, according to the situation. Next one, अब हम लोग जब हमारे दोस्तों को मिलेंगे तो हम उसका नाम, एज वगैरह तो नहीं पूछेंगे. So we're going to ask him several normal questions. For example, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ कैसे जा रहा है. So let's have some questions over here in conversation informal. For example, how are things? We can say hi, hello, how are things? कैसे सब कुछ? How are things? How are things? All the questions have same meaning, but the answers are different. So the person can reply, great. मतलब मैं मजे में हूँ. I'm great. How are things? I'm great. Next, we can ask the person, how's everything? कैसे चल रहा है सब कुछ? कैसे जा रहा है सब कुछ? कैसे चल रहा है सब कुछ? How's everything? The person can answer according to the situation. Pretty good, thanks. काफी अच्छा चल रहा है. काफी अच्छा चल रहा है. That's what. Pretty good, thanks. Next, we can ask the person, how are you doing? क्या कर रहे हैं आप आजकल? कैसे कर रहा है सब कुछ? कैसे चल रहा है सब कुछ? क्या कर रहे हैं आप आजकल? So the person can say, okay, thanks. यहाँ पर thanks क्यों बोल रहे हैं? ये manner है, good manner. So हम लोग अगर किसी कोई हम लोगों को पूछ रहा है भाई आप कैसे हैं, तो मतलब उसने पूछा बहुत बड़ी बात है. So we can say there, okay, thanks, thanks. So I'm okay. मतलब मैं ठीक ठाक हूँ. मतलब ठीक ठाक हूँ मैं. I'm okay. Next one, the person can ask you or you can ask the person, how is it going? कैसे जा रहा है सब कुछ? How are you doing? कैसे चल रहा है सब कुछ? We can ask any questions because questions are the same. सब questions का meaning same है. आप कुछ भी question पूछ सकते हैं, but you have to answer according to a situation. Next one, so the person can answer not bad. मतलब नहीं अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है. Not bad. Next one, what's up? Hi, hello, what's up? How are things? How's everything? How are you doing? कुछ भी question पूछ सकते हैं, सब questions का meaning same ही है. So the person can answer over there, can't complain. किसको सुनाओ मेरा हाले दिल. मतलब यानी ऐसी situation में हूँ, ऐसी condition में हूँ कि बयान भी नहीं कर सकता हूँ, किसी को complain भी नहीं कर सकता हूँ मैं. Alright, means what? This is the lowest level of the answer. Means we can say can't complain. किसको सुनाओ मेरा हाले दिल. So suppose let me give you an example. आप लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं, एक्सीडेंट हुआ, बीमार हो गए आप लोग, हाथ वगैरह पैर वगैरह वो टूट गया और आप लोग ऐसे पड़े हैं हॉस्पिटल में, और आपका दोस्त आया, हाय, हेलो, हाउ आर थिंग्स. तो जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको ग्रेट ही बोलेंगे. यू कैन जस्ट से अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, नॉट बैड, आई एम ओके, कांट कंप्लेन. जरूरी नहीं आप वहां पर ऐसे पैर लटका और आप बोल रहे ग्रेट. Alright, it will become something illogical. And at the end, you can just part your friend. अब जैसे दोस्त है हमारा, तो हम लोग उसे सिर्फ goodbye बोलकर छोड़ेंगे क्या? नहीं. We can say love you, take care, bye bye, see you soon, cheerio. So let's have some new partings over here. For example, we can say see you soon. फिर मिलते हैं. Take care, अपना ख्याल रखना. Next one, sleep well. Bye bye. Bye bye. Short form bye bye. Next one, cheerio. This is what the new one for you. What do you mean by cheerio? अब तक दुनिया क्या बोल रही थी? Bye, guy, goodbye, goodbye. अब हम लोग आकर क्या बोलेंगे? नया, cheerio. नया मतलब है नहीं, इंग्लिश के अंदर नया नहीं है. It was means in ancient English, in British people used to say like this, cheerio. आपने सुना होगा word cheers, वहां से word आया है cheerio. So cheerio means what, like goodbye. When someone is leaving, we can say informally goodbye. So we can say that cheerio, cheerio. जब आप लोग ये इंग्लिश बाहर जाकर यूज करेंगे, लोग बोलेंगे oh my god, he is saying something new. वो डायरेक्टली डिक्शनरी ओपन करेंगे और बाद में आपको सलाम मारेंगे. oh my god, he is learning something great. So that's what, instead of saying goodbye, goodbye बहुत अभी normal हो चुका है. So we can say there cheerio.
cheerio. आजकल लोगों को कुछ नया चाहिए, so that's what new is here, that's what unique, ये आपके इंग्लिश को यूनिक बनाएगा. That's what cheerio. You can say have a nice day or adieu. What do you mean by this adieu? Adieu means alvida. When someone is leaving forever, when someone is leaving for forever, at the time you can say there adieu. अब कोई इंसान अगर हमेशा के लिए जा रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं adieu, मतलब कभी वापस आने वाला नहीं है, अलविदा. All right, one of my student was there and he was asking me once that sir, अगर कोई इंसान मरता अगर होगा तो उसको adieu बोल सकते हैं क्या? अरे बेचारा जो नहीं मर रहा है वो भी मर जाएगा. So we can't say to the person who's dying adieu. All right, next one. Now we can say sweet dreams or we can say bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. It's a French origin word. Bon voyage, when someone is traveling for a long time but he will be coming back, so we can say there bon voyage. अगर कोई बहुत दूर जा रहा है, for example कोई जा रहा है लंबे सफर के लिए, अमेरिका जा रहा है, but he will be coming back after 5 years, 3 years, so we can say there bon voyage. Bon voyage. So when someone is traveling for a long time, we can say there bon voyage, right? Or we can say so long, be happy, etc. So this is what you can have conversation informal in English. All right, thank you.